नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराधन्या प्रवर्तमानस्य अत्र ब्राह्मणोनि राधे एकपञ्चाशततमे वर्षे प्रथममासे प्रथमपक्षे प्रथमदिवसे अन्नतृतीये यामे तृतीये मुहूर्ते रथान्तराद्वात्रिंशत्कल्पानां मध्ये अष्टमे श्रीश्वेतवाराह कल्पे स्वायम्भुवादिमनवन्तराणां मध्ये सप्तमे वैवस्वतमनवन्तरे कृता द्वापरकलिसंख्यकानां चतुर्णामिकानां मध्ये वर्तमाने अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमपादे भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते प्रयागराज क्षेत्रे त्रिवेणी संगमतटे प्रभवादिषष्टिसंवत्सराणां मध्ये नलिनामधेय संवत्सरे दक्षिणायने रवौ शरद ऋतौ महामाङ्गल्यप्रथमासोत्तमे मासे आश्विन मासे शुभे कृष्णे पक्षे अद्य यां महाशुभपुण्यतिथौ शनिवासरान्वितायां हस्तनामधेय नक्षत्रे ऐन्द्रयोगे नागकर्णे कन्याराशिस्थिते श्री सूर्ये कन्याराशिस्थिते श्री चन्द्रे मेषराशिस्थिते श्री भगवद्देव गुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशिस्थानि स्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगणगुणविशेषणविशिष्टायां वेलायां महाशुभपुण्यतिथौ आत्मा अनावरणपूर्वक दैवीयशक्तिजागरणद्वारा कौशलगोत्रः पुनीतखन्ना नामकस्य यजमानस्य तस्य मातुः स्वर्गीय सुषमाखन्ना नामकस्य यजमान्याः गौलोकवासी आत्मशांति परमगति विष्णुलोक स्वर्गलोक प्राप्त्यर्थं च यजमानस्य सर्वविधिकल्याणार्थं सर्वविधिरक्षणार्थं सकलकामना संसिद्ध्यर्थं च पितृदेवता कृपा आशीर्वाद प्राप्त्यर्थं च अद्य दिवसे प्रयागराजस्थिले पंचब्राह्मणद्वारा नानाप्रकारेण व्यञ्जनकदलीफलमेवामिष्ठानसहितस्य भोजन उपरान्ते यथाशक्ति राजकीयमुद्रा द्रव्यदक्षिणा भोजनं संकल्पम् अहं करिष्ये वयं करिष्यामहे। ॐ जजाग्रतो दूरं वेति दैवान्तरो सुप्तस्यागतैवैति दूरं नमः ज्योतिकां ज्योतिरेकान्तन्वे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्पसिद्धिस्तु यजमान कल्याणमस्तु ब्राह्मण वचनं परिपूर्णमस्तु पितृदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये।